In previous class, we have seen that QE max has a direct relation with delta, right? Formula uski thi QE max is equal to plus minus delta by 2. So we realize, by the way, what is QE max? What is QE max? Quantization error. अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? बुरी चीज. So we realize quantization error has a very direct relation with delta, and delta is the step size. याद है step size? Step size. और mid value of step size हम लिखते हैं quantization value. Vmax minus Vmin and all that. By the way, so we realize that we have a relation of quantization error with respect to step size delta. This is point number 1. Point number 2, which you must say, so as a solution to decrease this quantization error, what should I decrease? What should I decrease? Why there is a delay? If he has answered like this, I would really want to answer very quickly. So in order to decrease QE quantization error, I need to decrease step size. Now that is how the next method which you saw versus, which is named as differential pulse code modulation. D, you write the heading. ये by the way ये वो line थी जिससे आपको previous method और नए method में link मिलेगा. मुझे keep on saying. आपकी शायद next week में presentations होने वाली है, ठीक है? For this subject, okay? So उसके लिए एक key point ये है कि आप जब भी you might have presentations for this subject in next week as a part of assignment. Because the way you did your assignments, I didn't have a response as I expected. Only few students did. But definitely their dedication and their effort will not be wasted. But then, to give one more chance to other candidates who didn't score well over there, I might have a session of presentations for you people in the next week, where you people will be divided in groups of 3 or 4, and each group will be assigned a topic. But there you have to make 2 parts. One is that you will have to make notes, written or printed form notes, which will be descriptive. Another will be presentation part. You have to make a PPT. This PPT will be presented by all 4, but maybe internally 2 will work on the notes and 2 will work on the PPT, and then they will share the knowledge, so that everyone of that group knows what is inside the PPT, and every one of the group knows what the rules are, what the concept is. Do you get my point? Is that clear? This will be done in next week most likely for you people. Currently it is happening for mechanical side. So why I touch this point? So there in your notes you should have this synchronization, or I would say flow, that if you discuss something, before discussing that just highlight 1 or 2 line importance of that, why that topic is important. So that is the key component of good notes, that they try to link and interrelate topics, or at least give some basic background of the topic as if it is possible for you. Okay? So topics will be decided on Saturday. Like you will have Saturday, Sunday to prepare whatever you want to prepare. Saturday morning or in the mid you will be given a topic, and you will collaborate with each other through Google Meet or maybe physically meet, whatever you want. So you will do that on Saturday, Sunday, right? Because यहाँ पे कॉलेज में ऐसे आपको टाइम नहीं है वैसे मिलने का. आप तो मिले होते हो एक साथ, लेकिन फिर भी मिलते नहीं हो, है ना? Physically you are here, but we'll see if it is possible on Friday. We will try to get it on Friday. So the heading is, next heading, okay? Dpcm, differential pulse code modulation. The heading is, ये पॉइंट सबको समझ आया ना बेटा? I'll just repeat it very quickly. मैंने कहा QE max quantization error होता है. Quantization error has a direct relation with delta. ठीक है? Okay. Delta is step size. तो हमें किसी न किसी तरीके से अब step size का वैल्यू कम करने की हम कोशिश कर रहे हैं. इसी वजह से हम एक नेक्स्ट मॉड्यूलेशन टेक्निक पे जा रहे हैं जिसका नाम है अब डिफरेंशियल
पल्स कोड मॉड्यूलेशन, जो पल्स कोड मॉड्यूलेशन ही होगी लेकिन उसका एक डिफरेंट वैल्यू, एंड उसका नाम है DPCM, डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन. Point number 1, DPCM. In DPCM, देखिए ऐसे, in DPCM, quantization error can be decreased. Quantization error can be decreased without affecting transmission bandwidth. Quantization error can be decreased without affecting transmission bandwidth. ये मेरा पॉइंट बोलने का मतलब क्या है, बिकॉज बैंडविड्थ इज इक्वल टू NFS, RB के बराबर होती है बैंडविड्थ. अब अगर हम डेल्टा को कम करना चाहिए, डेल्टा कम करने के लिए वी हैव टू ऑप्शन, लाइक वी हैव V peak to peak डिवाइडेड बाय 2 raised for n. आइज ऑन बोर्ड प्लीज. डेल्टा को कम करने के ऑप्शंस हैं दो. डेल्टा को, आइज ऑन बोर्ड, डेल्टा को कम करने के ऑप्शंस हैं दो. एक तो ये है कि आप डायनेमिक रेंज ऑफ द वोल्टेज कम कर दो. मतलब अगर सपोज आपका डायनेमिक रेंज था -10 to 10, आप उसको करो -5 to 5 फॉर एग्जाम्पल. ये उससे पीक टू पीक वोल्टेज का वैल्यू कम हो जाएगा, तो डायरेक्ट रिलेशन है डेल्टा भी कम. दूसरा है आप n को इंक्रीज कर दो, लेकिन n को इंक्रीज करोगे तो बैंडविड्थ भी इंक्रीज हो जाएगी बहुत ज्यादा. देयरफॉर इसका मतलब DPCM में हम ये वाला मेथड यूज करते हैं, ना कि ये वाला मेथड. देखिए पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा समझ? तो सिंपल है. इससे क्या समझ आ रहा? ये वाला देखो बेटा, हमें मकसद है डेल्टा से. क्यों? क्योंकि QE मैक्स जो है या QE जो है वो है डायरेक्ट रिलेटेड टू डेल्टा. डेल्टा कम का फॉर्मूला क्या है डेल्टा का? V मैक्स माइनस V min, ये लिख लो जरा. डेल्टा इज इक्वल टू V मैक्स माइनस V min डिवाइडेड बाय 2 raised for n. अब मैं डेल्टा चाहता हूँ कम हो कि ज्यादा हो? डेल्टा कम हो. डेल्टा को कम करने का तरीका या तो ये वाली क्वांटिटी बढ़ा दो या ये वाली क्वांटिटी कम कर दो, बिकॉज डेल्टा इज इनवर्सली रिलेटेड टू दिस क्वांटिटी एंड डायरेक्टली रिलेटेड टू दिस क्वांटिटी. This decreases, delta decreases. This increases, delta decreases. Because that is what inverse relation is, and that is what I need a bit more attention from you. And that's why it was easy. ठीक है? Okay. Anyways, now, yeah. Anybody? Okay. Now, if I increase this quantity 2 raised more, and how can I increase this? By one. How can I increase this quantity? This quantity, this one. n बढ़ा देंगे 2 raised for 2, 2 raised for 10. So जो ही हम n बढ़ाएंगे यहाँ से बैंडविड्थ भी डिपेंड है n पे. किस पे? n पे. n बढ़ाएंगे बैंडविड्थ बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी. तो ये मेथड अच्छा मेथड नहीं है, because bandwidth means money. If we increase, if we have a system which consumes very high bandwidth, that means we'll have to purchase a good amount of bandwidth for that system, because bandwidth is purchased, you know. So the more the bandwidth a company has to purchase, the more costly the system will be. Okay. So therefore in DPCM we go for this method. That's why I said in DPCM quantization error can be decreased without affecting transmission bandwidth. So you can say delta hat is equal to V max minus V min divided by 2 raised for n. Therefore we, next one is here we decrease the dynamic range of the signal from higher voltage values to lower voltage values. Here we decrease the dynamic voltage range
ऑफ द, व्हाट डू आई मीन बाय डायनेमिक वोल्टेज रेंज, मतलब कि ये कहाँ से कहाँ तक वैरी होता है, मतलब इसका पीक वैल्यू और पॉजिटिव पीक एंड नेगेटिव पीक वैल्यू वैरी अगर हो रहा है 0 to 8, मैं इसको डिक्रीज करूंगा वी मैक्स लिमिट 0 to 2 ऑन, ठीक है। उससे हो सकता है लेटर ऑन कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन फिलहाल के लिए हमने वोल्टेज रेंज को कम कर दिया, समझ आ रहा है। As a result, okay, you can write this in Dpcm. By decreasing the dynamic range of the signal, ये important point है, जिससे आपको ये पूरा समझ आएगा। In Dpcm, by decreasing the dynamic range of the signal to be quantized, in Dpcm, by decreasing the dynamic range of the signal to be quantized, मतलब वो वाला सिग्नल जिसको हमें क्वांटाइज करना है उसकी अगर हमने डायनेमिक रेंज डिक्रीज कर दी, कॉमा quantize to be quantized, comma step size decreases, step size decreases, and as a result quantization error decreases. That is a valid and a strong point. Okay, I'll repeat. In Dpcm, dynamic range of the signal to be quantized is decreased in Dpcm by decreasing the dynamic range of the signal to be quantized. In Dpcm by decreasing the dynamic range of the signal to be quantized, comma step size decreases. कवर कैसे करना? क्या? You are always busy, yeah? No, I was in admission. Okay, go to that right top one. Right top one. Quick. So, to be quantized, comma, step size decreases as a result of this quantization error decreases. Quite logical. You are with me? Are you with me? See, are you with me? I don't think so. Come on the board, please. Come on the board, please. I said. हाँ, डायरेक्ट। So next thing is Dpcm transmitters are heading के block diagram of a Dpcm transmitter. The block diagram of a Dpcm transmitter starts with a low pass filter. क्या होता है लो पास फिल्टर का काम? जनरली जब ये मैसेज सिग्नल के नजदीक होता है, कम ऑन ओ भाई क्या होता है लो पास फिल्टर का काम जब ये मैसेज सिग्नल के नजदीक होता है? एग्जैक्टली किसने बोला? ये कौन बोल रहा है? चलो no noise. I said whenever somebody comes late, you should just settle down. No discussion, बच्चे. देखो बेटा, I will not explain. I repeat, I will not explain the operation of every block. But if this question comes in examination, you need to mention the operation of every block. Now I just told you verbally, the operation of this block is to band limit the signal. So you can write one line while writing the explanation that the job of the low pass filter in the initial, as the initial stage is to band limit. 4 लाख बचे न्यू ले, बाग बीच में अपन छान. ए सुन ले किस खड़ा खड़ा.
Next, the job of the sampler is to sample the signal or convert the signal into discrete signal जो भी है. अब अगर ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो सैम्पलर अलग से एक्सप्लेन कर डालो क्या फर्क पड़ता है वो तो पता है ना सैम्पलर क्या है आया समझ. And that's how the things will go. एरोज का ध्यान रखना बच्चे, साइंस का ध्यान रखो. Now look, the point is that how do we actually decrease the dynamic range now? Huh? Yeah, this is prediction filter. And at the end you have a encoder. Like you had one for a PCM system because एक PCM के end पे क्या था? Encoder. PCM के start पे क्या था? Low pass filter और sampler. बस ये वाला सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है. इसको आपने समझ लिया, आपने DPCM परफेक्टली समझ लिया और ये टेक्निक भी बहुत अच्छी है. अच्छी है आप बाहर हम यहाँ पे I need someone volunteer. I need you people for an example. Can you come? 66 here. Look, आप बीच में आओ. Look, what I want you to identify is these are three different people of different heights, right? This is very important. Imagine them being the frame. This is with the board को touch करो, थोड़ा बोर्ड के साथ आओ. आप थोड़ा लाइट आप राइट Okay, these are three. These are very important. These are three different signals. Okay, they have to be circles in the screen by the way. Imagine these three to be impulses that we are transferring to the channel. How do we transfer them? We transfer first signal, then second, then third, right? By this, I have to say send the signal in the channel, which is ranging from say the value of first impulse is 10 volts, another is 7, the third one is say 5. So instead of sending the complete voltage value, what do I do is I send the difference voltage value between the two signals. पहले का वैल्यू क्या है 10, दूसरे का 7. आप समझ रहे हो ना कि आपको समझने कैसे आ रहा है. तीसरे का 5. ये बता आपने Now instead of sending the complete signal through the channel, say if I am the system, I take this signal first, then this signal, and then this signal. What I do in order to decrease the dynamic range, मतलब मुझे पहले इसको स्कैन करना पड़ता है 0 to 10 send, 0 to 7 send, 0 to 5 send. Instead what I do, I take this as a reference. I see 10 decrease. Only how much is decreased? 3. So I send the error, kind of error signal between the source. So I set first sample as 3. My system knows 10 is the reference. So it subtracts 3 from 10. So it understands that 7 is the next sample. You can go. Wait till the remote stay.
You just go. Now I am at level 7. I now again see the difference. 7. What is the error between the two? 2. So I send 2 in the channel. When it is received by the system, ignore. Previous value now was 7. Minus 2. The next sample has to be 5. Thank you very much. You can go. Next volunteer. So this is what we do in Dpcm. We just send the error signal between the two samples. By this, we decrease the dynamic voltage range of the channel. Previously, I had to send signals ranging from 0 to 10, 0 to 7, 0. So overall voltage range is decreased. I just have to send the voltage range of 0 to 10 is now changed to 0 to 3, 0 to 2, 0 to 1. Do you get my point? So that dynamic voltage range, जो मैंने आपको अभी ये चीज दिखाई, आप कंफ्यूज हो रहे थे ये है क्या? 0 to 10 is maybe decreased to 0 to 3 only. Do you get my point? And now let's see how that actually happens. जी. Okay, I'm repeating it, but now on this example, fine, so that we understand it realistically. बस ये बात समझो. Instead of we have 3 signals, हम सिग्नल वैल्यू नहीं भेजते हैं जो 0 to 10 होगा. हम इस दो सैंपल्स के दरमियान जो एरर सिग्नल है ना, E एरर पार्ट भेजते हैं. सिस्टम 10 को एज रेफरेंस लेता है, वो इस एरर पार्ट को एज से ऐड या माइनस करता है जो उसके पास ऑलरेडी रेफरेंस है. लाइकवाइज इस सिग्नल में जो एरर है, फिलहाल मैं डिफरेंस सेंड करते हैं, मैं इसको एरर बोलूंगा बिकॉज समथिंग माइनस समथिंग इज द एरर और आई वुड से द डिफरेंस. हम बस एक डिफरेंस भेजते रहते हैं rather than sending the complete signal. वो अब आपको आप समझ आएगा कैसे. हाँ? Again please. अगर सेम होगा तो obviously it understands I have to stay at the same value. अगर suppose error that is obviously same error तो तब क्या बोला? हाँ? That is still okay. That is still okay because देखो उसका रेफरेंस था 10. 10 को माइनस उसने कितना किया? 2. कहाँ पहुंचा? 8. हाँ, तो 8 के बाद और माइनस करेगा 2. सपोज अब सीक्वेंस नहीं की जरूरी है कि फॉलोइंग सीक्वेंस ही होगा. सपोज नेक्स्ट सिग्नल फिर से 10 आया तो एरर अब 2 नहीं आएगा, एरर अब -4 आएगा. तो उसको पता चलेगा मुझे रिवर्स करना है जो मैं प्रीवियसली कर रहा था. सो दिस इज अ बैलेंस सिस्टम. एनीवेज दिस इज माय लो पास फिल्टर, दिस इज द सैंपलर. So imagine my m of t is the original signal. My sampled signal will be m of n, t of s. Do you get my point? Why? Because your variable t is changed to nt of s, where t of s is the sampling period. Is that okay? Because आपको जो signal होगा वो अब इससे represent किया जाएगा, which is the sampled signal. यहाँ पे लिख लीजिए नीचे, where m n t of s is the sampled version of m of t, where m and t of s is the sampled version of m of t. एक और पॉइंट here, m cap of isoboard, m cap of n t of s, m cap of n t of s is the future value or the predicted value of the sample signal. M cap of n t of s is the future value, or you can say next value, is not future value, is the next value of the sample signal, or you can say the predicted value. Okay. आप देखिए प्रेडिक्शन फिल्टर.
प्रेडिक्शन फिल्टर जनरेट करता है, एम कैप ऑफ एंटी ऑफ एस प्रेडिक्शन फिल्टर जनरेट करता है, ठीक है। एम कैप ऑफ एंटी ऑफ एस किसने जनरेट किया? प्रेडिक्शन फिल्टर ने। तो इसका काम क्या है? प्रेडिक्शन फिल्टर predicts its nearby future value prediction filter predicts its nearby future value कि future value सिग्नल का क्या होगा, कॉमा the prediction done by the prediction filter the prediction done by the prediction filter will generally be very close the prediction, मेरा बोलने का मतलब है कि एरर जो होगा प्रेडिक्टेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू में वो बहुत कम होगा, ठीक है। सो द प्रेडिक्शन डन बाय द प्रेडिक्शन फिल्टर will generally be very close to the actual value, the predicted value या क्या लिखा, the prediction done by the prediction filter will generally be very close to the actual value. Suppose अब आप देखिए एनालिसिस पार्ट, एनालिसिस हम इसकी करते हैं। सपोज द समर आउटपुट इज m of nt of s minus m cap of nt of s, राइट। देखिए ये जो समर है, ये समर क्या कर रहा है? समर एक्चुअल वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यू में सबट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। वहां से जनरेट होगा एक एरर सिग्नल, ठीक। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल समझाई उससे थोड़ा सा हल्का सा हट के, बिकॉज अगर मैं आपको डायरेक्टली ये बताता आपको शायद समझ नहीं आता ये एरर सिग्नल मतलब क्या है। यहाँ प्रीवियसली मैंने सैंपल्स के वैल्यू लिए थे, लेकिन यहाँ पे प्रेडिक्शन फिल्टर सैंपल का वैल्यू प्रेडिक्ट करता है। ऑब्वियसली ये कैसे प्रेडिक्ट करता है? जो प्रीवियस वैल्यू था उसके आसपास वैल्यू लेता है, कोई वेरी क्लोज, तो ऑब्वियसली इसमें एरर तो होगा, हर एक सैंपल में एरर होगा। सो जब ये एक्चुअल वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यू को आप उसमें सबट्रैक्ट करता है, वहां पे एक एरर जनरेट होता है व्हिच इज नोन एज ई ऑफ एन टी ऑफ एस। ये क्या है? where e of n t of s is the error between the actual value and the predicted value. I repeat, where ये आपको हर एक टर्म लिखनी है आपके एग्जाम में, आपके आंसर्स में। ये टर्म क्या है, ये टर्म क्या है, ये टर्म क्या है, तो साथ साथ लिखते जाओ, साइड में लिखते हैं ना, जहाँ पे आप इक्वेशन डिराइव करते हैं, where epsilon is this constant, where rho is this constant, where सारा वो पर्चा लिख देते हैं ना। आपको वहाँ चाय की जरूरत है कि पानी की? अच्छा, ये मैंने तो थोड़ा हेल्प करा, ये मिस्त्री में ये मिस्त्री मैंने शब्द आसान ज़्यादा मगर थोड़ा बात क्यों होना चाहिए, ज़्यादा बात क्यों बाकी की फिक्र नहीं। So why e of n t of s is the error generated by the summer, which is the error between the actual value and the predicted value. Therefore, I will write the output of summer will be obviously e of n t of s. Error generate हो गया, यहाँ तक समझ आया? Any doubt over here? एरर सिग्नल कैसे जनरेट हुआ? प्रेडिक्शन फिल्टर में कोई समझो वैल्यू प्रेडिक्ट किया फ्रॉम द प्रीवियस नॉलेज, ये समझो इस तरह एआई है ना, एआई ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो लर्न करना, लर्निंग मॉडल, ये प्रेडिक्ट करता है वेरी क्लोज टू व्हाट एक्चुअली इज गोइंग टू हैपन। अच्छा, इसने कोई सैंपल का वैल्यू जनरेट किया, सपोज एक्चुअल सैंपल होना चाहिए है 10, इसने सैंपल वैल्यू जनरेट किया 8, तो एरर सिग्नल जनरेट किया, ठीक है ना। ये एरर जाएगा आगे, अब इसी एरर वैल्यू की क्वांटाइजेशन हो जाएगी, ठीक। एक्चुअल रेंज ऑफ सिग्नल था 0 to 10, 0 to 10 की क्वांटाइजेशन नहीं हो रही है, 0 to 2 की क्वांटाइजेशन हो रही है। उसी एरर को हम आगे भेज रहे हैं। फायदा ये रहेगा चैनल की डायनेमिक वोल्टेज रेंज कम होगी, और डायनेमिक वोल्टेज रेंज कम होने से हमें पता है क्या कम होता है? स्टेप साइज डेल्टा, और डेल्टा कम हुआ तो क्वांटाइजेशन एरर कम। ये ले एरर, अब हम देख रहे हैं कि हमें ये पता चला एरर को क्यों भेज रहे हैं, वो तो हमें पता चला ना। अब हम देखते हैं कि कैसे भेज रहे हैं। अब एरर को जब हम क्वांटाइज करने बैठेंगे, अब जरा ये लिखिए, जनरली प्रेडिक्शन एरर where e of n t of s is called as Heisenberg
where E of NT of S is the prediction error. E of NT of S is prediction error. Okay? E of NT of S will be prediction error. इसमें आप देखिए, generally prediction error will be very small in magnitude. Generally, prediction error will be very small in magnitude. That is the dynamic range of E of NT of S. That is the dynamic range of E of NT of S will be very small, right? मैंने ये कहा कि जो prediction error होगा E of NT of S that will be small. उसका मतलब ये है कि the dynamic range or the voltage range value of E of NT will be very small, and therefore corresponding quantization error. Therefore, corresponding quantization error will be very small. Therefore, corresponding quantization error will be very small. Can I erase this? Or no? Now let Q of NT of S be the value of quantization error, and it is equal to E of NT of S minus EQ of NT of S. What is EQ of NT of S? It is the output of this quantizer. EQ of NT of S. E of NT of S is input, EQ of NT of S is output. Where Q NT of S is the quantization error. So let's say this is equation 1, this is equation 2. Okay? Time क्या है? Okay. 42. Okay. So prediction filter जो है आप उसको एनालाइज करेंगे. I'll erase this part. ठीक है? भाई जब जरा इससे पहले हम प्रेडिक्शन फिल्टर का आउटपुट देखेंगे. हम प्रेडिक्शन फिल्टर को देखेंगे इनपुट क्या आ रहा है. इनपुट टू प्रेडिक्शन फिल्टर इज m cap of NT of S plus EQ of NT of S, जो कि आपको फिगर से भी दिखेगा सीधा सीधा. m cap of NT S यहाँ से आ रहा है और यहाँ से EQ आ रहा है. तो ये है आपका प्रेडिक्शन फिल्टर का इनपुट. आपने जस्ट अभी ये रिलेशन डिराइव की EQ of NT of S के लिए. अगर हम उसका वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो that will be equal to E of NT of S. Eyes on board. मैंने EQ के बदले ये वैल्यू पुट किया माइनस Q of NT of S. From previous equation we know m cap of NTS plus m cap of NTS plus E of NTS will give us m of NTS. ये दो का टर्म जो है ये किसके बराबर है? m of NTS. From equation 1, therefore I will put m of NT of S minus Q of NT of S is the final equation. Now this being the input to prediction filter, wait. सर वो EQ क्या है? हाँ? EQ and Q of S
आप खुद बताओ क्या है? आउटपुट सबको इसके बाहर नहीं आना चाहिए डायग्राम के साथ। जैसे क्वांटाइजर की आउटपुट में आना चाहिए इसके बाद है ना यहाँ पहले हो जाएगा पूरा ये रूम कंप्लीट, उसके बाद आएगा ये पहले आएगा। ये पहले ही आएगा। ये ना एरर यहाँ से जनरेट हुआ ना, यहाँ से एरर को ही हम क्वांटाइज कर रहे हैं। हम एरर ये आप फिर से पढ़ना, ये सारी इक्वेशंस प्रॉपर्ली लिख लो। Therefore, input to prediction filter is, please let me conclude. Input to prediction filter is m of nt of s minus q of nt of s. And we know that this, eyes on board please. Therefore, input to prediction filter is m cap of nt of s plus e of nt of s. हमने थर्ड डिग्री देखा, लेकिन हमने कहा ये दो टर्म बराबर होती है mn of t of s from equation 1 minus है q of nt of s, okay, which is quantization error. Therefore, we know that this term quantization error is very very small. क्यों है quantization error? हमने कहा ना कि इस मेथड में quantization error बहुत कम होगा. Hence, this term is neglected. Therefore, prediction filter का जो input होगा, that is given as mq of nt of s where mq of nts is quantized version of, where mq of nts is quantized value of the given signal. Ideally देखें तो m of nt of s is approximately equal to mq of nt of s because quantization error is very small. Therefore, इस तरीके से भी आपको समझ आ रहा है कि ये दोनों चीजें सेम है. Anyways, mq of nt of s is the quantized value of the given signal. By taking all the samples, last point है इसमें लगभग, मैंने क्या कहा? नहीं, आप लिखिए by analyzing all the samples, by analyzing all the previous samples, by analyzing all the previous samples of a given signal for sufficient time, by analyzing the previous samples of the given signal for sufficient time, comma, by analyzing the previous samples of the given signal for sufficient time, comma, prediction filter predicts next sample value of a given signal. Prediction filter predicts next sample value of the given signal ठीक. This the encoder, last block जो है, the encoder encodes only the error value. The encoder encodes only the error value between the two samples. ठीक है, एनकोडर जो है वो खाली एरर का वैल्यू जो है डिफरेंस बिटवीन द टू सिग्नल उसको एनकोड करता है. हालांकि एक
एडवांटेज आइज ऑन बोर्ड, एनकोडर को अब क्या करना है, खाली एनकोड एरर वैल्यू, एरर वोल्टेज वैल्यू भी कम है कि ज्यादा है, कम है, कम है तो हो सकता है यहाँ पे हमें एनकोडर में हम n भी डिक्रीज कर सकते, एनकोडर में हम नंबर ऑफ बिट्स भी सेव कर सकते, ठीक है, मुमकिन है एनकोडर में हम बस नंबर ऑफ बिट्स भी सेव कर सकते हैं अगर हमें लगा वैसा ऑप्शन, तो वरना बाय डिफॉल्ट कर भी सकते हैं। अब ये तो हमने सिग्नल सेंड कर दिया, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि रिसीवर एंड पे क्या होता है, वो जस्ट देखेंगे एंड बैक टू द स्टॉप। ये समझ नहीं आएगा उसके बजाय, अगर मैं इसको अधूरा छोड़ दूंगा ये सारा आपका हवा में रहेगा, मुझे नहीं पढ़ाना था वो, मगर जरूरी है। ये डीपीसीएम सिग्नल तो जनरेट हो गया, ये दिया जाता है एक डिकोडर को, ऑब्वियसली हेडिंग है इसकी डीपीसीएम रिसीवर। यहाँ पे आपके एनालिसिस पार्ट में लो पास फिल्टर का जो आउटपुट होगा जी, फोटो किसकी है? दीवार दीवार So therefore the low pass filter output is, इसको अपना काम करो, आप अपना काम करो। लो पास फिल्टर आउटपुट जो है that will be EQ of, eyes on board please, EQ of NT of S plus M cap of NT of S इनपुट लो पास इनपुट। तो देखिए अब आपको समझ आएगा क्या पूरा ये माजरा है। इनपुट टू लो पास फिल्टर इज विजिबल फ्रॉम द ब्लॉक। आइज ऑन बोर्ड प्लीज, लास्ट कांसेप्ट इस एक मुझे नहीं पढ़ाना था, टू बी ऑनेस्ट, दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, बट ये जस्ट मैं एक वर्ड इसलिए पढ़ा रहा हूँ बिकॉज वो आपको इससे समझ आएगा, वरना वो कंफ्यूजन लगेगा। अब देखिए, क्योंकि जब हमने कोई चीज को ट्रांसमिट किया, जब तक उसको हम पता नहीं चलेगा वो रिसीवर में कैसे उसको कंप्रीहेंड करेगा, तो उसकी सिग्निफिकेंस पता नहीं चलती है। तो डीपीसीएम यहाँ एज एन इनपुट है, डू यू एग्री विद मी, यस नो? डीपीसीएम एज एन इनपुट है टू रिसीवर। ये डिकोडर डीपीसीएम सिग्नल से निकालेगा EQ ऑफ एंटी ऑफ एस, क्योंकि हमने ट्रांसमिट क्या किया था, एरर ही ट्रांसमिट किया था, तो हमें एरर का वैल्यू ही निकालना है। EQ ऑफ एंटी ऑफ एस, यहाँ से दूसरा वैल्यू है M कैप ऑफ एंटी ऑफ एस, ये दोनों यहाँ पे ऐड होके फ्रॉम योर प्रीवियस नॉलेज EQ ऑफ एंटी ऑफ एस प्लस M कैप किसके बराबर होता है? EQ ऑफ एंटी ऑफ एस प्लस M कैप ऑफ एंटी ऑफ एस किसके बराबर होता है? You will get M
Q of NT of S. That is, आपको quantized message signal मिला वापस, right? And मैंने वहाँ पे भी कहा था MQ of NTS is approximately equal to MNT of S, which is the original message signal. ये पॉइंट का समझा आपको बता दें, ठीक है? क्योंकि देखो इक्वेशन से ही समझ आया ना, यहाँ पे ऐड होके आ रहा है EQ of NTS and M cap of NTS. From your previous knowledge from equation 1 and 2, we realize addition of these two will generate MQ of NT of S and MQ of NT of S isomorph. MQ of NT of S is approximately equal to M NT of S. Reason being, this is just the quantized value of M of T of S and quantization value बहुत कम होने के कारण या quantization error बहुत कम होने के कारण इनका value लगभग same ही होगा. Therefore, we will say that we get not MT but हमें मिलेगा M of NT of S. इसमें लिखिए last time in the reconstructed signal, finite amount in the reconstructed signal M of NT of S जो हमें मिला, that will never be equal to M of T, right? Do we know this all? Eyes on board, please. Whenever we use quantizer, we know that the final output at the receiver side will be M of NT of S and it will be never equal to M of T. What is M of T? The original transmitted signal. Why they won't be equal? Can you tell me at the back? Why M of T? Yeah, why MQ of N of